formula that we are going to do will be subset when A, B, C belong to real numbers. Alright, so let's quickly first revise the basics of quadratic equation that you guys have been studying from class 9th onwards. So we know that the basic is ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. Now, things that you should make sure that you should note it down are that a, b, and c can belong to set of complex numbers, right? Then also this will be called a quadratic equation. But you have to remember that we study majorly. We study what? Majorly क्या पढ़ाई करते हैं? Majorly we study when a, b, and c belong to real numbers, right? All the formula that we are going to do will be subset when a, b, c belong to real numbers. But अगर a, b, c complex numbers होंगे तब भी ये चीज will still remain quadratic equation. We also know that discriminant d, which is called as b square minus 4ac, irrespective whether a, b, c are complex or purely real, still the discriminant value will still remain the same. What are the roots? Roots are written like, we all know that minus b plus minus root d by 2a. These are the roots. Again, a, b can be complex, but roots value will still remain the same. Okay, now let's focus on that what happens that when a, b, and c belong to set of real numbers. Real numbers, and that means a, b, c are also known as the coefficients, right? Coefficient a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term, and obviously for quadratic a cannot be equal to 0. नहीं तो वो linear term में convert हो जाएगा, right? So if a, b, c and are linear, then what we can say about the condition of the roots that we have already studied? There are three conditions based on again the condition of roots. If your comes out to be greater than 0, that means your d comes out to be greater than 0, तो ये क्या होगा? एक real number बनेगा. Real number बनेगा तो कैसे आएंगे? Roots are real and they will be distinct. There will be two different values. याद आ गया होगा सबको अभी तक, है ना? If your d is equal to 0, that means roots में plus minus d under root d आएगा ही नहीं. You will have real but equal. ठीक है? तो you will still get two roots, but there will actually be one solution. तो यहाँ पर हम लोग कई जगहों पे confuse होते हैं. There will be two roots, what we call as equivalent to one solution, because we only get one different value. Whereas here you will have two roots and you will have two solutions. Solution is nothing but different values, different real values of x that you will get, right? So there will be one solution only. But we know that when d is less than 0, roots are not real, not real. ठीक है, और इसी पे हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे. d less than 0 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? नॉट रियल, और यू विल से इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज, इमेजिनरी रूट्स, यू विल यूज दिस. ठीक है, और इसी में इफ नो दैट द कंडीशन इज दैट a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो हम क्या कह सकते हैं? दैट हमारे जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो कैसे फॉर्म के होंगे? तो अगर एक p प्लस iota q होगा, देन कंडीशन इज दैट डेफिनेटली द सेकंड रूट, मैं प्लस करके लिख रहा हूं या चलो, एंड द सेकंड रूट विल बी p माइनस दे आर द कॉन्जुगेट. But remember, this is only possible when a, b, and c are real numbers. If a, b, and c are not real numbers, then we cannot say that they will occur in the conjugate pair. So if you want to take an example, let's take an example that x square minus 2 iota x minus 1 equal to 0. This is a quadratic, right? No doubt about it. But if you notice, the coefficients here are not real, because if you notice and compare, b की value क्या है? b is minus 2 iota, which is not real. Notice here the condition that we were solving was that they all should be real. They are not real here. So अगर real नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो conjugate pair में exist करेंगे. If you just solve it, you will be surprised to know that here it is nothing but x minus iota whole square. That is what we have written here. X minus iota whole square is the basically value. So you can see that both roots are x equal to iota. There is iota, comma iota. There are two roots. They are not conjugate pair. So conjugate pair occurs when a, b, c are real in nature. Another condition that you should remember is that if a, b, c belong to real. So let's talk about a subset here. अब हम कहते हैं कि a, b, c real भी हैं, but they are q. Q means set of rational numbers. अगर वो rational numbers हैं, what can be said? So the important formula that you now will have to remember is if a, b, c are rational numbers and one of the root comes out to be p plus under root q. That means irrational term, root q. So then other root would be what? P minus root q. But this is only valid when a, b, c are rational numbers. Please remember, very important. P plus root q, p minus root q. So let us quickly see the exception for this. So हमने बात बोला that a, b, c should be what? Rational numbers. So let's say I take this. This is a irrational number, right? 2 plus and root 3 becomes irrational here, right? So we can see here that your roots are what? 2 and root 3. Because चलिए यहाँ से एक और formula जल्दी से revise कर लेते हैं that formation of quadratic वो कैसे होती है? That how do you form quadratic? Very basic. X square minus sum of roots plus product of roots equal to 0, right? This is the formation of quadratic. So if you notice here, we come back to our original question. Here, if one of the roots is 2, then your other root is root 3. That means the coefficients. Also notice that the coefficient. So here the role of b is being played by what? Minus 2 plus root 3. ठीक है ना? b का coefficient होगा x का, minus b sign आएगा उसके अंदर. So 2 plus root 3 ये कैसा है? This belongs to irrational. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि अगर एक रूट आपका रूट 3 है तो दूसरा माइनस रूट 3 टाइप का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है. यू कैन सी दैट वन रूट इज रियल, अनदर रूट इज irrational, which does not follow this pattern. क्यों पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? Because the coefficients a, b, and c are not rational numbers. They are irrational. Okay, another important subset condition, we have done that a, b, and c are rational. So subset condition can be that if you know that a, b, and c belong to set of integer. अभी तीनों आपस में क्या है? इंटीजर्स हैं, और जहाँ पर एक स्पेशल बात क्या कही जाती है that a is 1. a 1 भी है आपका. और अब आप कहते हैं if roots are rational, if अगर मेरे को ये दिया गया है that my roots are rational, so we can say definitely one thing that means roots are all integer. Very important condition, roots are all integer. Okay, एक बार सोचते हैं बहुत ज्यादा दैट्स इंटीजर रूट्स कैसे आ रहे हैं. तो अगर हम देखते हैं अल्फा और बीटा जो होते हैं हमारे रूट्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हम लोगों की? इज माइनस b plus minus under root b square minus 4ac by 2a, isn't it? So it is given to you that the roots are rational. That means जो हमारा immediately thought आता है कि सर ये perfect square होना चाहिए, it is already given to you. ये क्वेश्चन में गिवन है. इसका मतलब आपको यहाँ पर stated था that b square minus 4ac comes out to be a perfect square. Then only this question can be possible. या तो perfect square बने या फिर वो जीरो बने. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट, घबराने की जरूरत नहीं है. क्या गिवन है? देखो, if roots are rational, rational कभी आएंगे जब अंडर रूट वाली टर्म नहीं आएगी, because if the under root term comes that makes it irrational, तो roots rational नहीं बनेंगे फिर. Okay, another term that we have to understand is when does a quadratic equation becomes quadratic identity. So पहली बात हमें समझिए what is quadratic identity. Identity का मतलब क्या होता है? Identity is which is true for all values of x. Identity is true for all values of variable or x, whatever you want to call here. So अगर हम देखें अपना quadratic को, that is ax square plus bx plus c, you are saying that ये हर x की वैल्यू के लिए 0 होना चाहिए. Whereas we have studied that quadratic can be equal to 0 for maximum 2 values, जो इसके हम उसको roots कहते हैं. But if it has to be equal to 0 for every value of x, वो एक ही केस में possible है जब
equal to 0, तब आप x की कुछ भी वैल्यू डालते रहो, you will always get the LHS as 0. So if a question comes which asks you that for what values of some parameter other than x, this quadratic equation is true for every value of x, that means आपको a, b और c. So इसमें एक चीज याद रखनी जो गलती कर देते हैं आगे चलते वक्त, that they should be all 0 simultaneously. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कर दिया आपने दूसरा नहीं करा, वो नहीं चलेगा. They should be all 0 simultaneously. Okay, so this topic, that is symmetric function of roots, this is something which we have been studying for a very long time, but importantly, it is still one of the very famous topics at every entrance examination. So we know that if ax square plus bx plus c is a quadratic equation where a is not equal to 0, then the sum of roots, right, that is we write as alpha plus beta, comes out to be minus b by a, and the product of roots is given as product of roots is c by a. And if we want to write this as in terms of factors of its roots, तो एक ऐसी इक्वेशन लिखी जा सकती है a x minus alpha into x minus beta. Remember a बाहर आएगा because अगर आप सिर्फ x minus alpha and x minus beta लिख देंगे तो x square का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, क्योंकि मैच नहीं होगा. अच्छा, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स कैसे बनते हैं? जब आपके क्वेश्चन आते हैं अल्फा और बीटा में कुछ इंटरचेंज हो गए. दैट मींस दैट यू वुड बी यूजिंग, लेट्स से, alpha square plus beta square. You could be using alpha square minus beta square. You could be using alpha cube plus beta cube, right? You would be having modulus of alpha minus beta, right? That is difference of roots. So ये तरीके के जितने भी सवाल आएंगे जहां पर alpha by beta and so on and so forth आएंगे क्वेश्चंस, तब कैसा होगा वो हमें थोड़ा समझना है यहाँ पर. So alpha plus, and remember whatever cases you are given, that is powers of roots, you have to solve using alpha plus beta and product of root, that is alpha beta. इसी को यूज करके सॉल्व करना है. For example, you should remember that alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, and the value of alpha plus beta and alpha beta are known to you. This is quite simple. ये बना पहले इस तरीके से और फिर एक बना alpha minus beta. Now how to solve alpha minus beta? Let's see here, ये बहुत जरूरी है. यहाँ पर तो आप अंडर रूट कर दे पहले, और अगर हम इसको ऐसे करते तो ऐसे बनता, फिर आप इसको सॉल्व करते तो अंदर क्या बनता? alpha square plus beta square minus 2 alpha beta. ठीक है, अभी alpha square plus beta square कैसे सॉल्व होता है वो आपने यहाँ अभी ऑलरेडी करा हुआ है. आप वो वैल्यू अगर उठा के यहाँ रखते हैं तो ये देखो ये क्या वैल्यू आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. So this is what will give you the difference of roots. अगर कोई difference of roots बोलता है, then also you can find it with the help of alpha plus beta and alpha beta. Alpha cube, beta cube से सारे जो सिंपल फंक्शन होते हैं याद करने पड़ेंगे आपको, जो आपके प्योर अलजेब्रा के फॉर्मूले से वो यूज हुए हैं और कुछ नहीं. Similarly notice alpha plus beta is known. You have alpha square plus beta square. Again go and put this value back here. तो इसी तरीके से यूज करते रहेंगे तो आपके सारे जो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हैं उसे क्वेश्चन बड़े आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे. ओके, कई बार ऐसे सवाल बनते हैं that you are given ax square plus bx plus c equal to 0, alpha and beta are given their roots, और some of the cases they will ask you big powers. Let's say आपका यहाँ 19 आ गया plus beta raised to power 19, कुछ ना कुछ इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है ना, कंजंक्शन में लगाते हुए. So जब बहुत बड़ी पावर्स आ जाती हैं, this gives us the hint कि ये जो रूट्स हैं ये कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे. And there is a very special case that you guys can remember for this कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन टाइप के क्वेश्चंस में. कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? ओमेगा, जैसे देखा जाए तो ओरिजिनली तो हमारे पास कितने होते हैं? 3 रूट्स होने चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, पर जल्दी से एक बार अगर देखें तो होते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो उसी का कॉन्जुगेट, दैट इज -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2. ये दो वैल्यू होती है. इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि you have to remember that their value is 1 plus omega square equal to 0, और omega cube की वैल्यू 1 होती है. इनके कंजंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आपको ये अभी टफ लगता है, once you do the complex number chapter, you revise it, these questions will become very very simple. So इसमें एक चीज और आप अभी इस समय याद रख सकते हैं कि x square plus x plus 1 जो एक्सप्रेशन है, ये क्या एक्सप्रेशन होती है? x minus omega into x minus omega square. That means इसके रूट्स कौन से हो गए? x equal to omega रूट हो गया और x equal to omega square रूट हो गया. इसकी वजह से अगर मुझे मान लीजिए अल्फा की पावर 19 निकालना है, that is omega raised to power 19, तो कैसे निकलेगा? ओमेगा की पावर 19 है तो 19 को 3 से डिवाइड कर दीजिए. Whatever the remainder comes after dividing the power by 3, for example 19 divided by 3, remainder comes 1, it is actually equivalent to omega. That's it. We will do this in depth when we will revise complex numbers, but you should know the basic कि x square plus x plus 1 अगर टर्म आती है तो इसका मतलब क्या है, आगे से याद होना चाहिए कि भाई ये हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स देने वाला है. Another set of rules that you can remember to make your life very easy is transformation of roots. Let's take ax square plus bx, ax square plus bx plus c as the quadratic equation, and we call that इसके roots हैं alpha and beta are roots. So you will basically get some kind of questions which will ask you, पहला क्वेश्चन देखो, find equation whose roots, ऐसा आ सकता है, whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. Let's say, ठीक है, alpha plus 2 beta plus 2 are the roots. So what you will do in this case, you can just solve without doing anything calculation. You can say that replace x by x minus 2. तो जो इक्वेशन बनेगी, that means कहां पर रिप्लेस करना है? ये बना a x minus 2 whole square plus b x minus 2 plus c equal to 0. जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे they will be alpha plus 2 beta plus 2. So अगर हमें इसको जनरलाइज करना था, that means if there is alpha plus k beta plus k, what you will do, you will substitute x by, कैसे कर देंगे? x minus k से substitute कर देंगे. Had it been that it was alpha minus k beta minus k, हम क्या करेंगे? We will substitute by plus sign. And interestingly, ये सिर्फ प्लस माइनस पे खत्म नहीं होता है रूल, आप इसको मल्टीप्लिकेशन में भी ले सकते हैं. So the next rule that you guys can remember, that let's say the new roots are k times alpha, k times beta. So that means आपको करना क्या पड़ेगा? आपकी बार x को रिप्लेस करेंगे हम लोग x by k से. If it is multiplied, then you will replace it by k. Let's say आप कहते हैं the roots are, the new condition है roots are reciprocal. ठीक है, roots are reciprocal. Reciprocal होने का क्या मतलब हुआ? अब नए roots हैं आपके पास 1 by alpha and 1 by beta. तो इस केस में आप क्या करेंगे? Replace x by 1 by x. Can you see how easy it will make your entire question? आप सीधा इक्वेशन में डाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Alright, so though there are different roots, you can actually solve for equations जिनके roots under root, cube root भी हो, but these are very solvy. You have to do a lot of calculation which are not asked at basic examinations, so you don't have to worry. If this simple knowledge is there with you, you guys are fundamentally more than sufficient to solve any question which will be based on transformation of roots.